Hello, welcome back. I am Aman Soni and welcome to M12. Okay, so in previous video, what we have learned is what is ML, what is explicit programming. Then we have seen the different approaches towards ML, the supervised learning approach and the unsupervised learning approach. For those who haven't seen that, please pause the video and we'll wait here. Okay, so yeah, in today's video, what we are going to cover is the linear regression and the intro to the gradient descent, right? So in the previous video, we have also seen what is regression and so yeah, regression का हमारा example क्या था? The house price prediction and also when we have to predict what is going to be the stock price after a particular interval of time, right? So yeah, this is the previous data and after this point what we have to predict is that कि हमारा stock यहाँ पे lie करेगा कि हमारा stock यहाँ पे lie करेगा. Okay, so उसके according हम हमारी investments करेंगे, right? So yeah, all this come into the regression, and one of the regression algorithm, one of the basic regression algorithm, I would say, is the linear regression, right? So yeah, in today's video we'll cover all that. So yeah, let's get going. What is linear regression? Okay, so let's see what the definition says. Linear regression analysis is used to predict the value of a variable based on the value of another variable, right? Sorry. Yeah. Okay. The linear regression analysis is used to predict the value of a variable based on the value of another variable. Okay. देखते हैं क्या चीज है उससे पहले ये जान लेते हैं कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं द वेरिएबल यू वांट टू प्रिडिक्ट इज कॉल्ड द डिपेंडेंट वेरिएबल and the variable you are using to predict the another variable that value is called the independent variable. अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं लाइक ये इक्वेशन तो हमने की होगी बचपन में y is equals to mx plus c. Okay, where m is the slope. What is c? C is the intercept, right? What are y and x? Y and x are variable, you will say, but are those independent variable or are these the dependent variable? Okay, so here x is the independent variable and y is the dependent variable. And now you will ask how you said that, like dependent kaun sa, independent kaun sa. How can anyone say that? Okay, so let's suppose there is some value of x. When suppose x is, let's suppose there is an equation y is equals to 2x plus 1, right? Now, if the value of x is 1, what will be the value of y? Value of y is going to be 3, right? But when the value of x is changed to 2, what will be the value of y? Y is going to change to 5, right? So, depending on the value of x, y is changing. That means x is an independent variable, it can choose its value, and according to that value, the y is going to change. Okay, so yeah, so here y is the dependent variable, and what is x? X is independent variable. Okay, so yeah, अब समझते हैं दोबारा से लीनियर रिग्रेशन क्या था. लीनियर रिग्रेशन इज यूज्ड टू प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल. Used to predict the value of variable, that means we are predicting the value of y based on the another variable. What's that? That's x. Okay, linear regression is nothing but predicting a value of a variable on the basis of another independent variable, right? लेट्स सपोज हम इसको एग्जांपल से समझते हैं. ओके, तो लेट्स सपोज हमको एक क्लाइंट है, हमारे पास क्लाइंट आया, ठीक है. यू आर वर्किंग इन एन बिग एमएनसी एंड देयर इज अ क्लाइंट. ओके, सो ही वांट टू बाय अ हाउस. ओके, अभी हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं. बिल्कुल, ही वांट टू बाय अ हाउस एंड ही इज प्रोवाइडिंग अस अ सीएसवी फाइल. सीएसवी फाइल इज नथिंग बट एन एक्सेल फाइल. ओके, ही इज प्रोवाइडिंग अस अ एक्सेल फाइल. उसके अंदर हमको क्या है मिला हुआ है, लाइक नंबर ऑफ बेड्स,
and another column is the cost of that apartment. Okay, so let's suppose if there is number of bed is 1. Okay, the cost of that apartment is 2 lakhs, 20 lakhs, sorry. 2 lakh में कुछ नहीं मिलता भाई. Okay, so yeah, if the number of beds increase to 2, then the cost becomes 30 lakhs or something. Okay, so like this there are various number of beds and various costs attached to that. Okay, but what our client is asking, like if we want to buy a house of 10 bedrooms, okay, so what should be the cost that he must buy that in order to have the maximum uh, profit, right? What must be the cost after 10 bedrooms? Well, we all know कि सिर्फ ये चीज consider नहीं होती है. Like there are various factors like the area, the drainage system, and the electricity supply, and the uh, nearby kirana stores and all that. बहुत सारे factors consider होते हैं, पर let's suppose there is only factor right now for us. Okay, so that's a feature. Okay, so that's a feature we have provided कि हमको 10 बेडरूम सेट की कॉस्ट बता दो. और यही लेट सपोज हमने यहाँ पे प्लॉट कर लिया, ये हमारा ग्राफ है. डोंट सी दिस रेड लाइन, ओनली द ग्राफ. ओके, सो हाँ, ट्रेनिंग डाटा. अब इसको इससे समझते हैं कि ट्रेनिंग डाटा हमको मिल गया, दैट इज द ट्रेनिंग डाटा, राइट. अब लीनियर रिग्रेशन क्या करेगा? लीनियर रिग्रेशन एक क्या है? हमारी लर्निंग एल्गोरिथम ही तो है. लर्निंग एल्गोरिथम. ओके, सो ट्रेनिंग डाटा इज अ लर्निंग एल्गोरिथम. ये हमको क्या प्रिडिक्ट करके देगा? ये हमको एक हाइपोथेसिस बना के देगा. Okay, so now you'll ask what is hypothesis? Hypothesis is nothing but a function only, fx. Let's suppose it is fx. Okay, अब हमको एक hypothesis मिल गई which is a function or you can say equation. Okay, sorry. तो हाँ, अब हम इसको इनपुट देते हैं हाइपोथेसिस को. इनपुट में हमने 10 दिया. इनपुट क्या है हमारा? the number of bedrooms. Now we want cost. What will be the cost associated with 10 bedrooms? Okay, input, then it will give some value, that is our prediction. So this is basically the flow chart how the linear regression or any kind of regression works. Okay, so yeah, अब इसके अंदर वैसे हाइपोथेसिस क्या थी हमारा? लेट सपोज हमारी ये वाली इक्वेशन थी. सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एन हाइपोथेसिस. व्हाट डज दैट मीन? लेट सपोज हमारी अगर इक्वेशन ये आती थी तो इसके अंदर x की वैल्यू हमारी अगर हम 10 देंगे, ठीक है, तो व्हाट इज गोइंग टू बी द आंसर? 21. ओके, सो वैसे ही हमारा डाटा पॉइंट्स के अकॉर्डिंग एक इक्वेशन बन के आएगी, एंड that equation is going to be the cost of that flat or apartment, right? Okay, so for the linear model, linear model से हम क्या समझते हैं? linear means one, right? Means the degree will be one, degree of the equation will be one. तो हमारी ये वाली इक्वेशन भी तो डिग्री ऑफ वन ही तो थी, y is equals to mx plus c, right? ओके, सो या डिग्री वन थी तो हम इसको लिखते हैं एच एक्स इज इक्वल्स टू थीटा नॉट प्लस थीटा वन एक्स. सो या इसमें और y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में कोई भी डिफरेंस नहीं है. वी ऑल नो दैट, राइट? सॉरी, हाँ, इसके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है. ठीक है, ये हमारी एक इक्वेशन आ गई सिंगल ऑर्डर की linear equation for a single feature only. I'm again focusing on a single feature, right? ऊपर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमारे पास number of beds is a single feature and we are predicting the value of y, right? But
हमको ये चीज भी पता है कि हमारे पास कोई भी, अगर कोई भी क्वेश्चन आता है या फिर कोई भी प्रॉब्लम अराइज होती है किसी भी कंपनी में, कोई भी इशू आता है, तो एक सिंगल फैक्टर पे कोई भी चीज डिपेंडेंट नहीं होती। अगर एक सिंगल फैक्टर पे अगर वो चीज डिपेंडेंट है, तो देर इज नो नीड ऑफ यूजिंग कंप्यूटर, राइट? योर ब्रेन इज इवन 100 times faster to deal such kind of problems, right? Deal with such kind of problems. Okay, so what if there are more than two features, right? तो हमारी इक्वेशन चेंज हो जाएगी। एच एक्स इज इक्वल्स टू थीटा नॉट प्लस थीटा वन एक्स वन प्लस थीटा टू एक्स टू प्लस this goes on and on. Okay, depending upon the number of variables, this equation is going to change. Okay, so what is going to be the general equation? ये तो हमने बात कर ली, डिफरेंट डिफरेंट हमारे फीचर्स चेंज होंगे तो हमारा ये ऐसा दिखेगा। ओके, व्हाट इज द जनरलाइज इक्वेशन फॉर दैट? तो जनरल इक्वेशन, ठीक है, हम इसको देख के ही जनरल इक्वेशन लिखते हैं। ओके, सो एच एक्स इज इक्वल्स टू थीटा नॉट एक्स नॉट theta 1 x1 theta 2 x2. What does that mean? It is nothing but the summation of theta j xj, where j equals to from uh, 0 to uh, the number of features, right? So this is the equation. This is the equation, right? But there is one more thing, that when the value, when there is sorry, yeah, when j is equals to 0 or not, the value of x is going to be 1, right? अब इसको इसमें कन्वर्ट करके देखते हैं। when theta not, then x is 1, then after that theta 1 x1 theta 1 x2 theta 2 x3, and it goes till n. Okay, so yeah, this is our general equation. I'm going to write that. Let me give it a stamp. Yeah, star, star, star. Yeah, this is an equation, general equation. Okay, then after that, let me change the color of the pen. Once I okay, blue. जनरल इक्वेशन हमने लिख ली। अच्छा हाँ, एक और चीज है, डोंट यू थिंक किसी भी चीज को सॉल्व करने के लिए, यू गाइस मस्ट बी फ्रॉम द मैथमेटिकल बैकग्राउंड आई सपोज, तो किसी भी चीज को सॉल्व करने के लिए द मैट्रिक्स इज ऑलवेज द बेस्ट चॉइस आई थिंक। वो कंप्यूटेशन को बहुत आसान बना देता है और बहुत इजी कर देता है हर चीज को आपके लिए। तो हम थीटा जे को ऐसे नहीं लिख सकते, सॉरी थीटा को हम ऐसे नहीं लिख सकते, theta 1 theta 2 and goes till theta n. You can write this like, okay, so then after that हम x को भी ऐसे लिख सकते हैं 1 x1 x2 x3 and so on till xn, right? You can write this. But you also know that when you have predicted some value, right? चलो हमारे पास एक हाइपोथेसिस आ गई, ठीक है, हमने उस हाइपोथेसिस से एक वैल्यू प्रिडिक्ट करी किसी भी इनपुट के लिए। इनपुट सपोज आ गया हमारा 20 बेडरूम सेट, व्हाट मस्ट बी द कोस्ट, जैसे आ गया हमारे पास 2 करोड़ मस्ट बी द कोस्ट। बट डोंट यू थिंक कि जो हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यू आई है और जो एक्चुअल वैल्यू है उसके अंदर डिफरेंसेस होंगे? दैट्स ऑब्वियस, राइट? कोई भी मॉडल आपको 100% एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दे सकता। और अगर कोई भी बात बोल रहा है कि 100% रिजल्ट मतलब मेरा मॉडल सही है, तो उसको छोड़ दो, उसके साथ बैठने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो या 100% कोई भी मॉडल एक्यूरेट नहीं हो सकता। ठीक है, अगर वो होगा तो वो
भगवान की श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है। तो देयर विल बी एन एरर, राइट। तो लेट सपोज हमारी एक हाइपोथेसिस आई जिससे हमारी एक इक्वेशन आई। वो इक्वेशन थी 2x+3। ये हमारी इक्वेशन होगी। ठीक है। तो दैट्स द स्लोप एंड दैट्स द इंटरसेप्ट, राइट। अब हमने ये प्लॉट कर ली। प्लॉट करने के बाद, तो अगर मैंने पूछा उससे कि व्हाट विल बी द वैल्यू एट 15th बेड, तो वो हमको ये वाली वैल्यू बताएगा। सॉरी, उसको हमें ये वाली वैल्यू बतानी चाहिए, राइट। बट वैल्यू एट 15 इज दिस। देयर इज डिफरेंस इन द एक्चुअल वैल्यू एंड द प्रिडिक्टेड वैल्यू। सो एज एन इंजीनियर हमारा काम क्या होता है? हमको एरर मिनिमाइज करना है। एरर मस्ट बी मिनिमाइज, सो जो हम क्लाइंट को हमारे वैल्यू दे सकें, दैट मस्ट बी नियरली टू एक्यूरेट। द एरर मस्ट बी मिनिमम, राइट। तो ये हमारा क्या होगा, इसको बोलते हैं एरर। ओके। अब एरर होता क्या है? एरर इज नथिंग बट द एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड, राइट। एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड, दिस इज द एरर। बचपन से करते आ रहे हैं तो हम, ठीक है। फिर चलो ये हमारा एरर हो गया, लेकिन एक और चीज देखो। लेट सपोज हमारा एक्चुअल वैल्यू तो हमारी है, वो आ रही है समथिंग अबव दिस hypothesis, ओके। तो ये हमारी वैल्यू आ रही है। तो दिस माइनस दिस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, वी नो दैट। बट इन केस ऑफ दिस पॉइंट, द एक्चुअल वैल्यू is down below the curve, sorry, the linear equation, but the predicted value lies above the actual value, right? तो हमारा इसके अंदर एरर क्या आएगा? हमारा एरर इसमें आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है। बट वी नो दैट एरर कैन नेवर बी नेगेटिव। ठीक है। तो इस सिचुएशन को डील करने के लिए हम क्या करते हैं? इसके अंदर एक मैथमेटिकल अप्रोच होती है कि हम स्क्वायर लेके उसका रूट कर देते हैं। एवरीवन नोज दैट, राइट। तो इसके अंदर भी हम यही करते हैं। एक्चुअल वैल्यू को हम कर लेते हैं y से डिनोट, y माइनस प्रिडिक्टेड। प्रिडिक्टेड क्या था हमारा? प्रिडिक्टेड वाज अ हाइपोथेसिस, राइट। हाइपोथेसिस के अंदर x की कोई भी वैल्यू थी, किसी भी एक पॉइंट पे देखना था हमको, तो x की कोई वैल्यू थी, राइट। तो y आई, तो इस पॉइंट पे अगर हमको देखना था y की जो भी वैल्यू है एट दैट पॉइंट, x की हमने जो भी वैल्यू डाली इसके अंदर जो भी पॉइंट के ऊपर था, इसको हम कर लेते हैं स्क्वायर। ओके। तो इससे हमारा स्क्वायर हो गया। देन आफ्टर दैट हम इसको कर देते हैं रूट, तो इट विल कन्वर्ट इनटू अ पॉजिटिव, राइट। ठीक है। अब इसको हम अगर अच्छे तरीके से लिखें, तो डोंट यू थिंक इट इज अ कोस्ट फंक्शन? सो लेट मी राइट द कोस्ट फंक्शन फॉर यू। व्हाट इज कोस्ट फंक्शन? कोस्ट फंक्शन इज नथिंग बट द रूट मीन स्क्वायर। दिस इज आवर रूट मीन स्क्वायर आया। इसको थोड़ा सा प्यार से लिख देते हैं। प्यार से कैसे लिखें इसको? ओके। Summation of I is equals to 1 to m, I is equals to 1 to m, then h theta into xi minus I square, okay, or 1 by 2m. This is our cost function. And we have to reduce this, okay, in order to have our best solution, right? Okay. So yeah, what is m? M is the number of features, right, for which the model is training. I are the number of rows. And what is 2m? 2m is nothing but the number of features
and divided by 1 by 2. Okay, so yeah, this is our cost function. This is the error in our predicted value and the actual value. And obviously we know that the error must be low in order to get the best solution out of it. Okay, so the cost function needs to be minimized. And the cost, how will the cost function will be minimized? Okay, so let's suppose this was the equation. Okay, so let me write hx is equals to uh, theta naught plus theta 1 x1 plus theta 2 x2. Okay, let's suppose this is our equation. We know that the value of hx, which is y, and the value of x, this is given, right? We can't change it. But the only values we can alter is our hyperparameters. Okay, so what are hyperparameters? I'll tell you in that next video of ours. Okay, but अभी के लिए इतना समझ लो कि these are the hyperparameters. Okay, हमको इनको ट्यून करना पड़ेगा, ठीक है, in order to have the best results, so that हमारा error कम आए और the actual values and the predicted values should very much look alike. Okay, okay, yeah. So the cost function needs to be minimized, right? There is an approach which is called the gradient descent, जो हम कल पढ़ेंगे. उसका मैंने आपको बेसिक ओवरव्यू दे दिया है कि like we have to fine tune our hyperparameters in order to get the best, in order to minimize the cost function, so that our actual values and the predicted values should look very much alike. Okay, see you in the next video. Thank you. Have a nice day and happy learning. I know my writing is not that good, but yeah, my teaching is, I guess. Okay. Good night. Bye bye.